हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय डे 4 ऑफ लेह लद्दाख सीरीज़। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट व्लॉग में वी रीच्ड पैंगोंग, तो अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ पैंगोंग लेक के बारे में। पैंगोंग लेक इज़ सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 4,350 meters and is the world's highest saltwater lake. Its water, dyed in blue, stands in contrast to the dry mountains surrounding it, extending to almost 160 kilometers. इसका 1/3 लेक इंडिया में है और 2/3 चाइना में। Pangong Lake is one of the most famous lakes of Leh Ladakh and derives its name from Tibetan word Pangong So, means high grassland lake. This lake is also known for changing colors, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, blue, green and red at different times. ये लेक और भी फेमस हो गया आफ्टर 3 Idiots शूटिंग एंड इज़ नोन टू एवरी ट्रैवलर नाउ। यहाँ पर रहने के ऑप्शंस एंड फूड इज़ लिमिटेड, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इफ़ यू डोंट हैव एडवांस बुकिंग तो आप टाइम पर पहुँच कर अकोमोडेशन देख लें। Also had no advance booking, so we thought of exploring a bit around Pangong. So 4-5 kilometers हम आगे पीछे गए to look for accommodation, but because season was about to end, so accommodation या तो बंद हो गई थी या हो रही थी। So तो accommodation हमें मिल पाई, that was very close to the lake. यहाँ पर हमें एक टेंट मिला रहने के लिए और accommodation was fine, मतलब अंदर से it was very cozy. And because it was getting too late, so we thought of just booking the tent and staying there. तो अभी आप जो इस टाइम वीडियो पे देख रहे हैं, this is the tent where we stayed at. Phone connectivity is very very limited in the region and you may not find signals in phone most of the time. तो आप पहले से ही आप जहाँ पर आपको signals मिले, if you have to inform your family and friends, then you can do that. So यहाँ पर electricity भी limited है, टाइम के लिए मिलती है यूजली इवनिंग में, शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक, और फिर मॉर्निंग में फॉर सम टाइम। In tent close to lake was very different and adventurous. जहाँ तेज़ हवा सारी रात टेंट को हिलाती रही, वहीं ऑक्सीजन की कमी से हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा थी, बट वी मैनेज द नाइट इन फ्रीजिंग कोल्ड वेदर। और जैसे ही सुबह हुई वी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट बैक टू ले। सो व्हेन यू हैव टू गो बैक टू ले, देन यू हैव टू कम टू दुर्बुक फर्स्ट एंड फ्रॉम दुर्बुक देन यू टेक द रोड टू चांगला पास, थ्रू विच यू कैन मूव डाउन टू लेक। Changla Pass is another highest pass and there's a mix of good, bad, slush road and even snow. Changla Pass का distance from Durbuk is around 35 kilometers and takes around 1.5 to 2 hours depending on road condition. हम जब चांगला पास पहुँचे तो ये भी एक कमाल का एक्सपीरियंस था, बट ठंड बहुत ज़्यादा थी एंड इट वाज स्नोइंग। आई वाज इवन नॉट एबल टू रिमूव माय हेलमेट, इतनी ठंड थी। चांगला पास की हाइट 17,688 फीट है और ये ज़्यादा देर, और यहाँ पर भी ज़्यादा देर रुकना एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर टी कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद वी स्टार्टेड डिसेंडिंग टू ले, और हमें ले पहुँचने में 3 to 4 hours लगे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 75 kilometers. The road condition is good with some work going in at different patches, but overall road condition was good and we reached Leh around 5 p.m. क्योंकि ये हमारी ट्रिप का लास्ट डे था, so feelings were mixed. We were only talking about the experience we had in last 4 days and how beautiful this place is. अगर जन्नत कहीं है तो यहीं है। यहाँ आप नेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। The entire series which I have shared with you is for 5 days from Delhi to Leh and back, जिसमें day 1 we started from Delhi and day 5 we reached back. But अगर आप ये journey by road करना चाहते हैं तो you should have at least 8 to 10 days to enjoy this entire place. Sorry, इस vlog में videos थोड़े कम हैं
as our phone batteries were completely out due to no electricity at Pangong Lake. So थोड़े ही videos और photos हम बना पाए. I hope you enjoy. थोड़ा ले मार्केट घूमने के बाद और कुछ फैमिली के लिए शॉपिंग करने के बाद वी मूव बैक टू द होम स्टे वी वर स्टेइंग एट और लास्ट में वी हैव टू रिटर्न द बाइक सो वी डिड सो एंड enjoyed our last meal at Lamayuru restaurant. Next day early morning we had a flight from Leh to New Delhi and this is how our 5-day unforgettable journey came to an end with the hope to come back again soon. I hope you like this last vlog of Leh series and if you like the video please like, share and subscribe to my channel. More videos coming soon on Manali series. Till then take care, enjoy. Thank you.